Okay. Yes, sir. Okay. So now we'll start with binary addition. All of you know this: 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1. Then why 1 plus 1 equal to 1 0? If I add 1 with 1, why it is 1 0? Because it is in binary number system. Actually 1 plus 1 is 2, but 2 how we represent in binary? 2 is 1 0. If you convert 2 Yes, sir. by binary number, divide 2, quotient is 1, remainder 0, then you divide again 2, quotient 0, remainder 1. So you go from bottom to top, this becomes 1 0. Got it? Similarly 1 plus 1 is how much? 11. 1 1. Because 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 corresponding binary is 1 1. Getting? See, try to recall your class 1 mathematics. What is that? The simple addition. Suppose I want to, let me open a blank page. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Two students are waiting, sir. Yes, sir. Let me talk. So I should actually have to set that no admit option will come, all will join. At the time of setting, you do not have to give the waiting room, right? Yes, sir. Yeah, next time I will do that so that So just disable. हाँ रेंज बोलिए नहीं अभी हो पाएगा डिसेबल. गुड मॉर्निंग सर Good morning. एंड Okay. Uh, Now let us go to your simple 10th class mathematics, class 1 mathematics. 285 plus 469. Now, when I add this 9 plus 5, what is that? 14. Are you listening? Yes, sir. 9 plus 5 is 14. Now, out of 14, we keep 4 here. You take 1 here, right? That means in decimal system, the 10 number of 10 number of, assume the 10 number of sticks is a bundle. If you make try to recall your class school teacher, they used to tell that make a bundle of 10 equal, make a bundle of sticks, 10 sticks equal to one bundle, then 100 sticks equal to another bundle. So out of 14 in decimal system, a bundle is 10. Using 10 you can do a bundle. So 9 plus 5 is 14. Out that I have kept making one bundle of 10. 14 can be written as 10 plus 4, right? Out of 10 plus 4, this 10 is a bundle. Similarly, in a binary, 2 is a bundle. In a octal, 8 is a bundle. In a hexadecimal, 16 is a 1 unit. Like that. So out of 14, so you have kept 4 here and taken one bundle here. This bundle is added here.
8 plus 1, 9, 9 plus 6, 15. Then 1 comes here. So 1 plus 2 plus 3, 7, this is 754. So out of 10, units you make a bundle. Similarly, when you add 1 plus 1 plus 1, that becomes 3. Out of 3, 3 can be written as 2 plus 1. So out 2 plus 1, out of that, this 2 is a bundle. So I have to keep 1 here. This 2 becomes 1 bundle. So this 1 comes here. This is 1, 1. Getting? All of you are clear? No, sir. Sir, can you explain it again? No, sir. Again. देखो ये 1 plus 1 plus 1 देखो ये 3 कैसे आ रहा है, ये 1 1 कैसे आ रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ. 1 plus 1 plus 1 is 3, right? Out of 3 I can write this is 2 plus 1. Like I have told you in 14 I write 10 plus 4. In decimal system 10 sticks is a 1 bundle or 1 unit. In decimal system 10 is 1 unit. It has multiple 10, 100 like that. Similarly in binary we have 2 is a 1 unit. So I have written 1 plus 1 plus 1 becomes how much? 3. 3 can be written as 2 plus 1. After that this 1 will be kept here and 2 comes here. But 2 is nothing but 1 unit in the decimal, like your decimal place. When you add 9 plus 4, 14 here, but 4 you keep here and you take 1, not 10. Instead of 10 you take 1 because 10 is a 1 unit. You're getting decimal 10 is a 1 unit. Similarly in binary 2 is 1 unit. So out of 3 I kept 1 here and taken 2 here, and 2 is a 1 unit here. So this becomes 1 unit. So this becomes 1. So this becomes 1 1. Clear word? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Yes. Hello everyone. Are you getting the concept? Sir, one more example. One more example. Suppose I have an example here. Now you add this 11 with 15. All of you add 11 with 15. 11 is how much? 8 plus 3. So 1011. Let us do it in a rough page. Eleven is how much? 1 0 1 1. So this is 8. This is 3. 11. Then I add with 1 1 1 1. Now tell me 1 plus 1 is how much? 10. 10. Out of 10 means 1 0, right? Or otherwise I can like 1 plus 1 let us 2. 1 plus 1 let us 2. Out of 2 that is 2 plus 0, right? I have to keep 0 here and carry 1 here. Getting? 1 plus 1 is 2. Out of 2 this a bundle is already formed and nothing remaining. So 1 plus 1, otherwise you can say 1 plus 1 is 10. Out of 10 you can say keep 0 here and keep 1 here. Getting? This 1 comes here, then 1 plus 1 plus 1 is 3. Out of 3, what I have to keep here and what I have to carry, tell me? Keep 1 and carry 1. I will keep 1 and carry 1. Then this 1 will be added here. 1 plus 1 is how much? 2. 1 0. 1 0. You have to keep 0 here
and carry 1 here. Then 1 plus 1 plus 1 is 3. I have to keep 1 here, and or 1 plus 1 is 1 1 and 1 is here. So 101 is nothing but 8 plus 3, 11. This is 11 and this is 15. 11 plus 15 is how much? 26. You can check this is the equivalent of 26. Because this unit is 0, 1, 2, 3, 4, 16. इसका वैल्यू है 16. इसका वैल्यू है 8. इसका वैल्यू है 2. 16 plus 8 plus 2 is how much? 26. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Very simple concept. You have already studied in your 10th, 11th school. In your school, you have studied this binary addition. Yes, sir. So different. Sir. नहीं पढ़े थे? No, sir. No, sir. So different teachers have different way of saying how to do. My teacher told like a stick and this bundle, and someone's teacher can have told that 1 plus 1 is 1 1. So that varies from person to person. So now you got clear. Either you can do by decimal ways. 1 plus 1 you can keep 2. 2 means you have to keep 0 here, and 2 means 1 unit. Either way that you can do, or 1 plus 1 is 1 0. Out of that 0 you have to keep here, 1 you have to keep here. 2 ways you can do it. Getting 1 plus 1 0. Then I have kept 1 here. 1 plus 1 plus 1 3. 3 means 1 here. I will keep 1 here. 1 plus 1 0. 1 plus 1 plus 1 3. See, don't worry, this type of question won't come, because they won't ask you the direct addition. There is a method called 1's complement method, 2's complement method. Questions will be asked on that. But I told you the fundamentals. When you become a teacher, you can teach your students, or you will all of you go to the software. No, sir. No, sir. कोई टीचर बनेगा? M.Tech PhD करेगा? Maybe. Yes, sir. Okay. Now tell me the answer. This one is very interesting question. 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 1 1 1 1. Let us do it. 1 1, then 2 1, then 3 ones, then 4 ones. If you have understood my concept, then you can do it. Let us see who is finding the answer. Otherwise you can तुम मुझे चीटिंग कर सकते हो. देखो 1 का वैल्यू कितना है, करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू ये 1 है, ये है 3, ये है 7 एंड ये है 15. 3 plus 1 is 4, 4 plus 7 is 11, 11 plus 25 is 26, and you can write the convert to 26 and you can write the binary number here. Getting? That is one way you can do it. But no one knows when you write the answer. No one knows how you have done it. Getting? So, if you want to be honest, whether you understood, then you can add these numbers and tell me the answer. One 1 0 1 0. 1 1 0 1 0. Let us check. देखो 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 4 4 से कितना यूनिट, कितना बंडल बनेगा? 2 bundles. 2 bundles. 2 bundles. What is the remainder? 0. 0. So I have to keep
I have to keep zero here and 2 bundles I have to take here. Now 2 plus 1 3 4 5 5 में से कितना बंडल बनेगा, कितना बचेगा? 2 bundles. 2 bundles and 1 remaining. So, One एक, remaining. हाँ, एक को रख दिया और 2 को मैंने ले लिया. 2 plus 1 plus 1 कितना हुआ? 2 bundles and 0 remaining. Yes. 4 means 0 remaining here and 2 bundles here. Then 2 plus 1 is 3. 3 में से कितना बचेगा, कितना बंडल होगा? 1 bundle and 1 remaining. 1 remaining. So that 1 come here. So 1 1 0 1 0. So this answer is correct. All of you are getting? सर और एक बार था. Okay. सर वो बंडल कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया. बंडल मीन्स एक यूनिट. जैसे डेसिमल में 10 नंबर से ये यूनिट देखो. सपोज 45 प्लस 69. 2 कैरी जो कर रहे हैं. हाँ, वही कैरी को हम वो एक कैरी वो 10 यूनिट होके जब 10 हो गया तक उसको वह एक यूनिट बताता है ना. 10 स्टिक्स लेके एक बंडल बनाने और एक यूनिट कर दिया. बंडल मीन्स 1 यूनिट. इधर बाइनरी में 2 को 1 यूनिट बोलेंगे. हाँ, 2 को 1 यूनिट बनाएंगे. उसको मैं बंडल बोल रहा हूँ. मेरे टीचर ने बोला था बंडल, तो इसलिए मैं पास कर रहा हूँ उसको. ठीक है. You can treat that as 1 unit. 9 plus 5 is 14. 14 means 4 remaining here and one unit comes here. That 1 unit is 1 bundle. I am telling. कोई बोला था फिर से बोलने के लिए, फिर से बोलूं? यस सर. Yes, sir. Okay. अब तुम मुझे बताओ. 1 plus 1 plus 1 जो पूछ रहा है मैं उसको पूछ रहा हूँ. मुझे बताओ. 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितना हुआ? 4. 4. If someone is waiting, I got a message. So 4 means how many units can be formed? बाइनरी में 2 में 1 यूनिट. अच्छा. तो 4 में कितना यूनिट होगा? 2 में 1 यूनिट. तो 4 में कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट. 2 यूनिट मतलब यहाँ पे 0 रखा और 2 यूनिट को मैंने यहाँ ले लिया. ठीक है. 4 में से मैंने 2 यूनिट बचा, 0 रिमाइंडर रहा और दोनों मैंने यहाँ पे ले लिया. Now 2 plus 1 3 4 5. सर उधर 0 क्यों रखा सर? मतलब 2. देखो अगर 5 होता तो मैं 1 रखता और 2 यूनिट कैरी ले जाता. हाँ. देखो एक बंडल में जो बच गया 10 में एक बंडल है. लाइक योर डेसिमल 10 में एक बंडल है. जो बंडल से बच गया वो बाहर रहेगा ना खाली. हाँ. खाली वाला यहाँ पे रहेगा. सर मतलब 2 का बंडल कर देंगे, जो बच गया उसको नीचे छोड़ देंगे. यस. तो 4 में से 2 बंडल कंप्लीट बंडल हो गया ना. मेरा कुछ बचा नहीं तो वो 0 रहेगा. समझ में आया? तो 4 में से 0 बच गया और 2 बंडल कंप्लीट बंडल हो गया, उसको मैंने ले लिया. 2 plus 1 plus 1 ये कितना हो गया? 3 4 5 हो गया. 5 में से कितना कंप्लीट बंडल है, कितना रिमेनिंग है? 2 कंप्लीट बंडल है, 1 रिमेनिंग. वो जो रिमेनिंग है वो मैं यहाँ पे रख दिया 1. फिर 2 लेंगे. फिर 2 ले लिया. तो 2 plus 1 कितना हुआ? 5 3 4 सर. 4. 2 plus 1 plus 1 4 हुआ. 4 में से कितना रहेगा, कितना जाएगा?
जीरो रहेगा सर। 0 रहेगा और कितना जाएगा? 2 जाएगा, टू जाएगा और फिर एक बंडल जाएगा। 2 1 3, 2 + 1 कितना हुआ? 3। 3 में से कितना रहेगा? कितना जाएगा? एक 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 रहेगा। रहेगा, दो जाएगा। हाँ, तो 2 मीन्स यहाँ पर एक बंडल रहेगा। हाँ 3 means 1 remaining, another 2, 2 means 1 bundle. So that becomes 1. Got it? सर। See, the simple way, if you cannot able to, if you find, always think that if you have done the mistake, do not need to be worried. You can just verify that. You can convert to its decimal value and you can verify. इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 15। इसको ऐड कर देना, देखो 26 आ रहा है, और 26 को तुम क्या करना, उसका बाइनरी में कन्वर्ट कर देना और यहाँ पे चुपके से लिख देना। इसको पता कि तुम लिखे हो डायरेक्टली और बाय दिस में, ठीक है? दिस इज द वे यू कैन चीट। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। All of you have understood the direct addition. यस सर। Otherwise, you can convert to decimal in your rough work. पीछे जाके रॉफ वर्क में डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, जो आया आंसर उसको फिर से बाइनरी कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है? देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 0 - 0 is 0, 0 - 1 is how much? 1. With a borrow of 1, you cannot subtract 0 - 1. You have to take a borrow, like a carry. In subtraction, we have to take borrow. Borrow means एक यूनिट आएगा, borrow means एक यूनिट आएगा, एक यूनिट is nothing but 2, 2 - 1 is 1, getting? That's why you are getting 0 - 1 is 1, and 1 - 0 is 1, 1 - 1 is 0. Now I am subtracting 25 minus 18. You write the equivalent value of 25 and you write the equivalent value of 18. Then you subtract. So 1 minus 0 is how much? 1 1. Then 0 minus, can you subtract 0 minus 1? देखो इसको समझो, try to recall, try to relate with decimal. देखो 335 से मैं 297 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ? 5 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा? No. I have to take the borrow from its previous number. तो ये हो गया, एक borrow means यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। देखो डेसिमल में 10 एक यूनिट है और बाइनरी में 2 एक यूनिट है, तो ये कितना हो गया? एक borrow लाया मैं, तो 5 becomes how much? 15. So 15 minus 7 is how much? 8. 8. That's why it is 8 here. यहाँ पे 3 से 1 चला गया यूनिट, तो यहाँ पे बचा कितना? 2. 2. तो 2 से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? So you have to take borrow. यहाँ से तुम्हें borrow लेना पड़ेगा एक। तो ये कितना हो गया? 12. 12 minus 12 minus 9 is 3. यहाँ पे कितना था? 2. 2 minus 2 minus 2 is 0. Getting the same concept, exactly the same concept, but here instead of 10, the unit is 1, the unit is 2, and when you take a unit from that, 1 will remain. देखो 1 minus 0 is 1, no problem. यहाँ पे 0 से 1 तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको पूछोगे तुम मुझे दोगे borrow, उसके पास भी नहीं है। उसके बाद हम इसको पूछेंगे तुम दोगे? हाँ, ये बोला हाँ मैं दूंगा। तो now it gives a unit. ये इसको 2 दे दिया, फिर ये इसको 2 दे दिया, तो 2 minus 1 becomes 1. यहाँ पर कितना बचा? 1. So 1 minus 0 1. जैसे यहाँ पे एक यूनिट देने के बाद ये 12 हो गया ना। After giving 1 unit, this 3 becomes 2, and when you give another 10, it becomes 12. Similarly, this was 2. Now after giving this one, this becomes 1. Getting 1 minus 0 is 1. यहाँ पे 2 minus 1 is 1. यहाँ पे 1 था, 1 minus 0 is 1.
ये खुद दिया था तो ये 0, तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड 1 माइनस 0 इज 0। सर वो खुद 1 होके 2 दे रहा है। कौन सा ये दे दिया? हाँ, जैसे यहाँ पे कितना 10 दिया, फिर इसके बाद ये 9 रहा ना, अच्छा सर। सेम वे, जैसे 10 दे के बाद ये 9 अच्छा हो गया। बाइनरी, हाँ 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 ये हाँ, दो सर आपको दो एक binary। देने के बाद ये 1 हो जाएगा। गेटिंग? अदरवाइज यू कैन चीट। 15 से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 7 इज 0 ट्रिपल 1। थोड़ा बॉरो वाला फिर से बताएंगे थोड़ा। देखो यहीं पे लिखता हूँ मैं 1 1 0 0 1 माइनस 0 0। So 1 minus 0 is how much? 1 1 1। ये काम, इसका काम हो गया। 1 minus 0 is 1। देन इसके लिए 0 minus 1 I cannot subtract. I will ask for the next friend. Can you give me? It is helpless. It cannot help because it has 0 value. Then it will ask for the next friend. Can you give me? Yes. So now it gives 1 unit. That unit comes here. Out of that, it will keep 1 unit here and give another unit to here. So this becomes 2. 2 minus 1 is 1. यहाँ पे since it has given 1 unit, the remaining is 1. So it how has. it becomes 2, sir. So that it will get. ये Sir, कैसे? the left 0 asks for the left 0 borrows a unit or bundle. I didn't get. जैसे यहाँ पे कैसे हुआ था देखो, ट्राई टू डेसिमल किया, क्या हुआ था, ये इसको 1 दे दिया। सपोज ट्राई टू रिलेट दिस वन, 3001 माइनस 1997। तुम कैसे करता हो डेसिमल बताओ? देखो ये इसको 1 यूनिट दिया, ये 3 से borrow करते हैं। हाँ, ये कितना हुआ? ये 11 कैसे हुआ? 10 कैसे आया यहाँ पे? 0 को दे रहा है, 0 0 को दे रहा है, इसके बाद ये इसको दे दिया, फिर ये इसको दे दिया, फिर ये इसको दे दिया, तो ये जो दे दिया 10। देखो ये इसको 100 दे रहा है, ये इसको 10 दे रहा है, ये इसको 100 दे रहा है, ये इसको 1000 दे रहा है। आउट ऑफ दैट ये गिव्स 1 यूनिट। गेटिंग? सो दिस बिकम्स 11। 11 माइनस 7 इज 4। तो इसमें कितना बचा? 9 माइनस 9 इज 0। यहाँ पे कितना बचा? 9 माइनस 9 इज 0। यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1। द सेम वे 1 माइनस 0 इज 1। यहाँ पे 2 यूनिट आएगा। यहाँ पे जब ये 1 यूनिट देता है दैट बिकम्स 2 हियर। तो 2 माइनस 1 इज 1। यहाँ पर 1 बचा, तो 1 माइनस 0 इज 1। सी if you feel this is difficult method, you can try that one, because this type of question won't come, that direct subtraction. और अगर लंबा देगा तो कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने में टाइम चला जाएगा। हाँ, जब लंबा होगा तो इसीलिए तुम्हें जैसे डेसिमल कर रहे हो उस तरह का करना है। यहाँ पे जैसे 1 1 पास कर दिया और जब देने के बाद 1 1 कम हो गया, जैसे यहाँ पे 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। देन यहाँ पे बचा कितने? 1 देने के बाद ये 9 हो गया। 9 माइनस 9 0। सिमिलरली यहाँ पे ये 2 दे दिया, ये 1 माइनस 0 इज 1। यहाँ पे आएगा कितना? 2। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये 1 दिया था तो दिस बिकम्स 1। जैसे वहाँ पे 9 हो रहा था, यहाँ पे 1 होगा, ये कम हो सर जाएगा। इधर 1 देगा ना सर, वो उसको बाजू वाले में 2 होगा, उसी 2 में से 1 आ रहा है तो मतलब हाँ, तो यहाँ पे 1 रहेगा ना। हाँ जैसे यहाँ पे 10 देने के बाद 9 हो रहा है, यहाँ पे 2 देने के बाद 1 हो जाएगा, और ये 1 देने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम काम करो, तुम जाके इन कूल माइंड ट्राई टू रिलेट द डेसिमल सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली द सेम एज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वहां पे जैसे 10 बिकम्स 9, यहाँ पे 2 बिकम्स 1। ठीक है? यस, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना? ठीक।
अदरवाइज यू कैन डू इन द राउटर बैक एंड में करके डाल देना है. And this is not important. Actually important is this one, using ones complement method and twos complement method. वो उस क्वेश्चन का कैसे काम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कैसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कभी नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम में, बिकॉज हमें पता है कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर एंड कन्वर्ट इट इनटू दिस, सो यू डू नॉट आस्क फॉर दिस डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, बट द मेथड इज वंस. कैसे काम कैसे देता है सर, मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज मतलब होता है क्या? मैं बताता हूँ. इसका एक्चुअली यूज है इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड. द कंप्यूटर डू नॉट, वी द ह्यूमन बींग्स कैन अंडरस्टैंड द बोरो द कैरी, पर कंप्यूटर को इसे पता नहीं ना. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बोरो, व्हाट इज कैरी. So we use another method called ones complement method and twos complement method, whether the computer do not have to do this borrow and carry. देखो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा ब्रेन है, हम जान सकते हैं कैरी हो रहा है या बोरो हो रहा है. तो कंप्यूटर के लिए हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे, एक प्रोग्राम जिसमें बोरो और कैरी का कांसेप्ट नहीं है. दैट इज ए कांसेप्ट ऑफ वंस complement twos complement method that we asked in the exam. Okay, to know that first we have to know the negative numbers. First you have to know the concept of negative number, then we will go for this ones complement and twos complement. So how to represent negative numbers in binary? There are three ways of representing negative number. One is sign magnitude, another is 1s complement, another is 2s complement. So first we start with sign magnitude. In sign magnitude, suppose the first bit is reserved for sign. That means whether it is a positive number and negative number, that we can know from the first bit. Suppose if MSB is equal to, what is MSB? All of you know MSB? Most significant bit. Yes. LSB? Least significant bit. So out of this, let us say 101, which is the most significant bit? This one. This is the most significant bit and this is the least significant bit. देखो, suppose I want to. Sir, some students are waiting, sir. Please allow them. No one is waiting. They said they got disconnected and Not showing anything. Okay. Now, if the first bit is 0, it is a positive number. If the first bit is 1, it is a negative number. Suppose I want to represent a number plus 5 in a 4 bit. There are 4 bits, right? And I want to represent plus 5. So the first bit is reserved for sign. If it is 0, then it is plus 5. If it is 1, it is minus 5. First bit is reserved for sign, then you have to write 101. This becomes plus 5. This becomes minus 5. Got it? no, sir. No? Okay. No. I am writing here. Suppose I want to write plus 5 in sign magnitude representation. There are 4 bits. Suppose, okay, admit. I told you that in a sign magnitude representation, what are the number of bits? The first bit is reserved for showing the sign. If the sign is 0, it represents, it is a positive number. If sign is 1, the first bit is 1, it represents the negative number. So to represent plus 5, first bit is 0 because it is a positive number,
then you have to write 101. But to write -5, to represent -5, what I have to write? Someone is waiting. To represent -5, the first bit is 1 because it is a negative number. Then you have to write 101. समझ में आया? Very simple. You have to see first how many bits you have to represent. If it is a positive number, the first bit is 0. If it is a negative number, the first bit is 1, and then you have to write the equivalent binary value. All of you are clear? Yes. So there is a formula. If there are n, it is a n bit system. Maximum how many numbers you can represent in positive? How many maximum positive numbers you can represent? How many negative numbers you can represent? Suppose n equal to 4. If it is a 4-bit system, the formula is this one: 2 to the power n minus 1 minus 1 to minus of 2 to the power n minus 1 minus 1. That means if n equal to small n equal to 4, 4 minus 1 is how much? If small n is equal to 4, n minus 1 becomes how much? 3. 3. So 2 to the power 3 is how much? 8. 8 minus 1 is how much? 7. 7. 7. So in a 4-bit system, using sign magnitude representation, you can write from -7 to +7. Getting? So in a 4-bit system, total how many number I can represent? 15. Kitna? 16 number. 15 numbers. 15 or 16? 15. Actually, suppose forget about negative numbers. In 3-bit, how many numbers I can represent? Forget about negative number. I am just asking a simple question. In 3-bit, how many numbers I can represent? 7 numbers. No. 8 numbers from 0 to 7. ये कितना हुआ? जितना बिट होगा 2 to the power that bit. तो यहाँ पर हमारा 4-bit सिस्टम है, तो मुझे 16 I can represent 16 numbers, but now I am representing 15 numbers because यहाँ पे -7 से +7 कितना नंबर है? Actually it is, there is a actually someone is requesting to join this ad. suppose -7 to +7, actually there is 16 numbers, but there is a disadvantage of sign magnitude representation. Actually यहाँ पर 0 का दो ये हम actually 15 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. -7 से 0 and 0 to 7 we are representing 15 नंबर. तो और एक नंबर कहाँ गया? कौन बता सकता है मुझे? Who can tell where is the number missing? देखो 3 बिट मतलब 0 कॉमन है. क्या? तुम एक 0 कॉमन है. कागज में लिखो -7 to +7 कितना नंबर हो रहा है देखो.
एक कागज में -7 -6 15 15 हो रहा है, तो ये गलती कैसे हुआ? 16 तो आना चाहिए, तो एक नंबर सर कहाँ चला दो गया? बार 0 कैलकुलेट कर ले रहे हैं ना अलग अलग में। कैसे? -7 to 7 में हम एक ही बार 0 ले रहे हैं, लेकिन हम अगर दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 बार 0 ले ले रहे हैं। यस यस यस, समझ में आया? देखो इसका एक ही दिस व्हाई वी आर गोइंग फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। कंप्यूटर एक्चुअली यूजेस द टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये दोनों का एक प्रॉब्लम है। तो जो साइन मैग्नीट्यूड का और वनस कॉम्प्लीमेंट का एक डिसएडवांटेज है दैट +0 एंड -0 हैज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। +0 जो है -0 दोनों सेम है ना? Is there any difference? But in sign में तुम बोलो मैंने तुम्हें +0 रुपीज दिया, तुम बोलो मुझे -0 रुपीज दिया, मतलब टोटल 0 रुपीज ही दिया ना। There is no concept of +0 and -0. But tell me in sign magnitude representation, what is the value of +0 and what is the value of -0? Tell me. देखो +0 के लिए क्या होगा? 0 0 0 0 0 लास्ट बिट में 0 रहेगा, then remaining 3 पानिया zeros. देगी जोड़ा ठिया काट दो ना। Got it? +0 का फर्स्ट बिट होगा 0, then रेस्ट 3 बिट होगा 0. -0 के लिए क्या होगा? 1 0 0 1 0 0. देखो इसका डिसएडवांटेज देखा, 0 तो 0 है, लेकिन +0 के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है, -0 के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग है. दैट इज द डिसएडवांटेज। इसलिए एक नंबर कम है। इसलिए एक नंबर कम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ इट इज एलिमिनेटेड इन 2s कॉम्प्लीमेंट। और 1s कॉम्प्लीमेंट में भी यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कंप्यूटर तुम्हारा ये दोनों मेथड यूज नहीं करता, और 2s कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 बीट में, इसीलिए 8 नंबर ना होके 7 नंबर है ऐसे। हाँ, ये हम 4 बिट के लिए किए। 3 बिट में ऐसे करोगे -2 से +2 तक, उसमें कितना आएगा? 2 to the power n - 1, 2 to the power 2 - 1, -3 से +3 तक करोगे और 2 0 आएगा। गेटिंग? हम 4 बिट में क्या किए? -7 से +7 तक, इसमें -3 से +3 होगा 3 बिट में, और 2 0 आएगा +2 से -0। तो समझ में आ गया द प्रॉब्लम ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, व्हाई वन नंबर इज मिसिंग, because the same 0 has 2 different representations. All of you are clear? All of you have got the problem? Yes, sir. Tell me. What's the problem? Yes, sir. Tell me. Can you explain it 1 second, sir? Actually, I got disconnected, and after a while, I got connected. So, Okay. so I missed the whole Which thing. one? The problem of sign magnitude. Yes, sir. The sign magnitude has a problem that +0, 0 has 2, although 0 is 0, 0 always 0 है, but +0 के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन and -0 के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन, although both are same, but one number is completely wasted, one place is completely wasted because of this +0 and -0. देखो +0 का रिप्रेजेंटेशन है, I have told you in sign magnitude first bit is reserved for the sign. So +0 के लिए यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा। +0 के लिए first bit is 0, then 3 zeros, और -0 के लिए first bit is 1, then 3 zeros. तो 0 तो ऑलवेज 0, +0 और -0 क्या दोनों का 0 होना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई फॉर ए 4 बिट सिस्टम वी आर गेटिंग 15 नंबर्स इंस्टेड ऑफ 16, वी आर गेटिंग -7 से +7, यहाँ पर है -0 एक है और +0 एक है, बल्कि दोनों एक होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 15 नंबर्स, बट दिस प्रॉब्लम हैज बीन एलिमिनेटेड इन 2s कंप्लीमेंट मेथड। यू कैन चेक दैट +0 and -0 both have a single representation.
इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा 0 0 0 0. आई विल शो यू. Till that you have to keep patience how it is coming. Sir, what is plus 0 and minus 0? 0 is neither positive neither negative. लेकिन यहाँ पे तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है कि साइन मैग्नीट्यूड में यही प्रॉब्लम है कि तुम एक एक नंबर स्टार्ट करके जाओ, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, देन यू राइट -0, देन यू कम +0, देन 1 2 3. सो -0 के लिए आएगा तुम्हारा अलग रिप्रेजेंटेशन और +0 then +0. You can only say 0. हाँ, if 0 you is neither positive nor negative. हाँ, तो और एक नंबर कहाँ मिसिंग हो गया, लेकिन देयर इज चांस ना, यू कैन राइट +0 -0. दैट्स व्हाई देयर आर दैट इज द प्रॉब्लम. बट इन 2s complement whether you write +0 or -0, the answer is same, plus only 0. But in sign magnitude this is the problem. देखो मैं आइदर +0 लिख सकता हूँ और -0 लिख सकता हूँ. +0 के लिए अलग आ रहा है, -0 के लिए अलग आ रहा है. मैं तुम्हें पूछूंगा प्लस, जैसे तुम पूछते हो मैं 3 लिखूँ या +3 लिखूँ. सिमिलरली मैं तुम्हें दूंगा +0 लिखो -0 लिखो. अगर इसका प्रॉब्लम नहीं होता तो एक ही रिप्रेजेंटेशन होता, लेकिन देयर इज ए चांस दैट a plus or -0 may come. That's why there are two different representations. Got it? Yes, sir.